नमस्ते। हम अपने नए वीडियो के साथ हाज़िर हैं। काफ़ी दिनों से हमने वीडियो नहीं बनाया है, पर आज हम ये क्रिसमस का जो सीज़न है उसमें हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो एक क्रिसमस पार्टी दी थी जहाँ पे क्रिश्चियन लीडर्स को इनवाइट किया था, उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। सारे जो अलग अलग चर्च के हेड्स हैं, जो उनके टॉप पोस्ट में हैं, उन सबको इनवाइट किया था। कार्डिनल्स, बिशप्स, कैथलिक बिशप्स और प्रोटेस्टेंट चर्च के बिशप्स, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन चर्चेस, जो इंडियन क्रिश्चियन चर्चेस हैं, उनके हेड्स को बुलाया था। और अलग अलग बड़े बिजनेसमैन जैसे कि जॉय लुकास के एमडी को बुलाया था, अपोलो के एमडी को बुलाया था। फिर वेल नोन एथलीट अनु जॉर्ज वहाँ पे थी और एक्टर जीनू मौर्या भी वहाँ पे आए हुए थे। ये सब पार्टी 25 दिसंबर को हुई, जहाँ पे कार्डिनल ऑस्वाल्ड ग्रेशियस ने अपने वक्तव्य में बहुत सारी तारीफ़ करी उनने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। इसी तरह से आज बिशप अनिल कॉन्टो ने भी बहुत सराहना की। जॉन वर्गिस, सेंट स्टीफन्स, जो बहुत ही वेल नोन और प्रीमियम हमारे इंडिया का कॉलेज है, उसके प्रिंसिपल जॉन वर्गिस ने भी बहुत तारीफ़ करी। बिशप साइमन जॉन, एंथोनी जेकब जो सीईओ अपोलो टायर्स के हैं, इस तरफ से बिशप पॉल स्वरूप, इन सब लोग ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने वक्तव्य में बहुत बहुत तारीफ़ करी कि वो किस तरह के दिग्गज नेता हैं, वर्ल्ड में किस तरह से छाए हुए हैं। पर इन सारे नेता में से किसी एक ने भी इस बात का जिक्र भी नहीं करा कि इंडियन क्रिश्चियंस पे हर साल 600 के करीब अटैक्स होते हैं। स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे आए दिन बहुत सारे अटैक्स क्रिश्चियंस पे लगातार होते चले जा रहे हैं और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी दर्ज है। आइए हम सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही वरिष्ठ एडवोकेट कॉलिन गंजाल्विस इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। सो माय क्वेश्चन वाज दैट Christian leaders went for a Christmas event at Prime Minister Narendra Modi's house. What would you have liked them to have told Prime Minister, and what do you have to say about the whole event? The most important thing they should have told him, and I hope they've told him, but I have a feeling they would have been very polite and not brought it up, is that there have been 600 attacks across the country in the year 2022, 2023, and the attacks are continuing in 2020, will continue in 2024. Now, these attacks were on Christian institutions, churches were ransacked, priests were arrested, put in lockup, etc., on the wrong allegation that they were doing conversion. So this anti-conversion law is being misused against the Christian community. Can you imagine 600 attacks every year? Now I want them to put their foot down and tell him all this cosmetic party business is all right, going for parties and so on is all right, but he must stop the attacks. And these attacks were by central government, political groups aligned to the central government. And all the names of these right-wing organizations have come clearly in the record before the Supreme Court. So he must stop the attacks if he is sincere at all. That's the message that they should give him. अब सुनते हैं क्रिश्चियन एक्टिविस्ट जॉन दयाल इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। वो काफ़ी अपसेट थे कि किस तरह से इतने सारे क्रिश्चियन लीडर्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिलने गए, पर फिर भी एक भी बार उनने जो क्रिश्चियंस पर अटैक हो रहा है इस बारे में उन्हें जरा भी चर्चा नहीं करी। सुनते हैं वो क्या कहते हैं। ईसाई भारत में कितनी शांति से आप कह रहे हैं ईसाई कितना संपन्न हो गया है, क्योंकि आप जानते हैं और आपकी सरकार जानती है कि आज की तारीख में सिर्फ 8,000 NGOs को FCRA मिला हुआ है, उसमें चर्च की बहुत कम है
कॉर्पोरेट सेक्टर के एनजीओ है, हिंदुओं के एनजीओ है, मुस्लिम और पारसियों के एनजीओ है, सिख्स और बुद्धिस्ट के एनजीओ है। आपने पिछले 4 साल में 1 लाख से भी ज्यादा एफसीआई लाइसेंस कैंसिल करके सारे ईसाई समुदाय की चलाई हुई संस्थाओं को स्टार्ट कर दिया है, हुक्म कर दिया है। सुनते हैं सोशल एक्टिविस्ट, वेल नोन सोशल एक्टिविस्ट शबनम हाशमी, इस बारे में वो क्या कहना चाहती हैं। ये जो सारे पार्टी हुई और इतने सारे लीडर्स जो मोदी को मिले, वो क्या कहना चाहती हैं। But I want to register my protest and convey to the leaders of the Christian community that what they have done is absolutely unacceptable. I, as a human rights defender, have fought for every time there has been an attack on Christian community, whether it was Kandhamar, whether it was Dang, or any other place. Jhabua, Alirajpur, we have travelled everywhere. We have been there for all fact findings, for standing up, organizing programs so that Christians are not attacked, and Muslims are not attacked, and Dalits are not attacked. One does not expect this from the people who should be standing and safeguarding the democracy in this country and raising their voices for equal rights for minorities and for all marginalized sections. Instead of that, what we heard on 25th December was vulgar. Those photographs which show the glee on their faces of being photographed with the Prime Minister, who is responsible for what is happening in this country, was disgraceful. And I strongly registered this protest. I tweeted saying that please don't call me for any more solidarity meetings. And I stand by that. And I'm not talking of people who are sitting here with me on this dais. But the Christian leaders or even the Muslim leaders who went and cozied up to the RSS. सुनते हैं जमीला कोशी, साइकियाट्रिस्ट जो कि कई सालों तक सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल दिल्ली में प्रैक्टिस करती थी और हाल में अब बेंगलोर में हैं। वो क्या कहना चाहती हैं क्रिश्चियन लीडर्स की जो मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। Mr. Modi's meeting with Christians was a carefully staged and executed political or PR event. That being the case, it was appropriate for the Christian leaders to talk about Christ's message to humanity and also about the Christian contribution to nation building and how we would definitely, continue to do that. But I do think that they went a little overboard in their, effusive praise of him, as if, Mr. Modi, thank you so much and all that. That was a little too much. And also the being overwhelmed by how natural he was and how down to earth he was. Well, he is not a king. He is, after all, our Pradhan Sevak, as he likes to call himself. He is accountable to us. So that level of, being overwhelmed was probably not appropriate. Neither was it appropriate to sort of, praise him for his encouragement of sporting events just at the time when our women wrestlers have been struggling with trying to call to the media's attention and the attention of the government, including the Prime Minister, the sexual harassment they've been facing and the total silence of the government, including Mr. Modi, on this. So certain things did stick out as being inappropriate. And also, this was an opportunity to speak about the persecution of Christians and other minorities all over the country, which have definitely increased after 2014. So that was missed. And what about Manipur? Manipur is an ethno-religious conflict where Christians are being the state government has been biased against the Kukizo Christian tribals. So this was an opportunity to raise these issues in public with the Prime Minister. सिंथिया स्टीफन्स सोशल एक्टिविस्ट हैं बेंगलोर से, वो क्या कहना चाहती हैं खासकर इस मौके पे जबकि रेसलर्स, हमारे फीमेल रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रही हैं और हाल ही में उन लोग ने कहा कि वो लोग रेसलिंग त्यागेंगी, उनने अपने मेडल्स भी वापस करे हैं जो कि पद्मश्री अवार्ड उनको मिला है विनीत फोगट को, उसने वो वापस किया है और साक्षी मालिक ने तो यही कहा है कि वो रेसलिंग छोड़ देंगी। इस बारे में सिंथिया स्टीफन्स क्या कहना चाहती हैं? This Christmas has been muted around the world because of the situation in Gaza.
where we have seen that due to the conflict, a large number of innocent civilians, especially children, have been caught in the conflict and have perished. We have all seen the visuals of baby Jesus wrapped in a cafe in a heap of rubble to signify, to symbolize what Christmas means to people at this time. And in fact, for the first time in remembered history, there was no celebration in Bethlehem. In such a context, we here in India are also facing serial persecution in various parts of the country. The Christians are being attacked in their homes when they are praying in various states, especially in the Hindi belt in North India, in the tribal regions. And also, we have this very large situation in Manipur. I feel that it was not a very good tactical move on the part of our Christian leaders, particularly the senior church leaders who were present, who were there and who spoke to Modi. Okay, they went. Many people felt that they should not have gone. But okay, they went. But at least they should have raised the issue of Manipur and the persecution of Christians. Otherwise, what's the point? And there was also for former champion, sports champion, a lady who happens to be a member of the BJP, who was praising Modi for his sports, encouragement to sports. I wonder whether the female wrestlers will agree with her. I think we are, as a community, we have lost by being a part of this process. सुनते हैं well known Christian activist and Jesuit priest सेड्रिक प्रकाश, जो कि अहमदाबाद बेस्ड है, वो क्या कहना चाहते हैं इस मीटिंग के बारे में. We are in the Christmas season here in India, and so much continues to happen. In Madhya Pradesh, officials have gone round literally telling people that they should not celebrate Christmas. In Manipur, hundreds and thousands of people, Christians, have been denied their legitimate right to celebrate this festive season. It's happening all over the country. Christians continue to be denigrated, demonized, and with a host of other atrocities being committed on this minuscule minority of India. Christmas, however, is a time of peace, of joy, of fellowship, of brotherhood. And it was very kind of significant that the Prime Minister had to invite the Christian leaders for a Christmas celebration at his residence. But the tragedy is that none of the Christian leaders had the courage to speak up, to say what is happening to the Christian community of India, the anti-conversion laws, the constant demonizing, the denigrating of the community, unless we take a stand as citizens of the country for every single minority, be it Christian, Muslim, Sikh, or anyone else, for anyone who's been denied their right to preach, practice, and propagate their religion, nothing may change. We have a secular country, we have the Constitution of India, and we as citizens of India need to strive for that today and always. मणिपुर में लगातार मई 3 से जो लगातार हिंसा हो रही है बिटवीन कुकी जो कम्युनिटी और मेती कम्युनिटी, जहाँ पे कई 100 चर्चेस जला दिए गए. आपको पता है कि मणिपुर में लगातार अटैक्स हो रहे हैं. जो कुकी कम्युनिटी, कुकी जो कम्युनिटी, जो कि मोस्टली एक्चुअली ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम क्रिश्चियंस हैं, ट्राइबल्स हैं, उनके सामने जो लगातार अटैक्स हुए हैं उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई है और बहुत सारा कंडेम किया है लोगों ने. बीजेपी की गवर्नमेंट जो वहाँ पे है, बीरेन जो है, जो सीएम है वहाँ के,
उनको भी काफ़ी अटैक किया गया है। कंडेमनेशन और कमेंट्स लोगों ने किए हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मणिपुर की हिंसा के इतने चलते 6 महीने से ऊपर हो गया और वो लगातार इस बारे में चुप रहे हैं। सुनते हैं डॉक्टर मेरी ग्रेस क्या कहना चाहती। According to me, those Christians who are part of the Modi's outreach program, I feel that they lack solidarity towards their Christian brethren, because it has already been displayed very clearly that seeing all the Christian churches being burned, even the Métis churches have been burned. So it looks like some sort of black skin in white mask. So this Modi's outreach program in general is for optics, to downplay what has been done to the tribal Christians, and especially when we know that there's lot of Christian persecution in India. बहुत सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी काफ़ी इसमें अपसेट है कि क्रिश्चियन लीडर्स, जबकि 2021, 2022, 2023 हर साल में करीब 600 जितने अटैक्स क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ ने फेस किए हैं। पास्टर्स पे अटैक्स हुए हैं, पास्टर्स के सामने फेक केसेस लगातार लगाए जाते हैं, चर्चेस अटैक हुए हैं। इन सब के बावजूद क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उन लोग ने जैसे कि एक भी इस तरह की बात नहीं करी कि इस तरह के अटैक्स रुकने चाहिए। इससे क्रिश्चियन कम्युनिटी काफ़ी अपसेट है। दूसरे लोग भी हैं, वो भी बहुत अपसेट हैं और वो सोच रहे हैं कि ऐसे वक्त पे क्रिश्चियन लीडर्स को क्या करना चाहिए था। याद आता है ऐसे पल जब एक बहुत बड़े नेता जिनने भी उस टाइम के माइनॉरिटी कम्युनिटी को अटैक किया था, तो उस टाइम पे भी यूरोप में किस तरह से क्रिश्चियन चर्चेस एंड क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन चुप रहे थे और बल्कि लगातार उस नेता की और उस लीडर की तारीफ कर रहे थे। क्या हिंदुस्तान में भी यही हो रहा है? क्या हिंदुस्तान में भी क्रिश्चियन लीडर्स को इतनी हिम्मत तो जुटा नहीं पा रहे कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये कहें कि अटैक्स ऑन क्रिश्चियंस मस्ट स्टॉप, कि क्रिश्चियन कम्युनिटी पे जो अटैक लगातार होते चले जा रहे हैं और जो कि यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम कहती है कि हर रोज़ कम से कम 2 अटैक होते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी पे, तो इस बारे में एक भी लीडर ने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ तारीफ़ों के पुल ही बांधे और एक से एक बढ़ के, जैसे कि एक से दूसरा भी और भी ज़्यादा तारीफ़ करना चाहता था, उस तरह की जो बातें रहीं। ऐसे माहौल में जबकि क्रिश्चियन कम्युनिटी रेगुलरली और बहुत ही बुरी तौर से अटैक की जा रही है, तो आपका क्या मानना है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं, बिशप्स हैं, पास्टर्स हैं, आर्च बिशप्स हैं, बिग बिजनेसमैन हैं, पर्सनालिटीज़ हैं, क्या उन लोग को कुछ कहना चाहिए था? ज़रूर आप इस बारे में कमेंट करें। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और इसको सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।